So hello everyone, welcome to MSG the online classes. In this classes we will discuss about the types of rational number and how they can be represented on a number line. अर्थात आमे वर्तमान जो टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर केते प्रकार अछि और तार जो टाइप्स गुडा को नंबर सिस्टम और नंबर लाइन ऊपर रिप्रेजेंट करबा. In the previous class we studied that the rational number are of two types. Okay, हम पढ़ले केते प्रकार रेशनल नंबर दुई प्रकार रेशनल नंबर. One is proper rational number and other is improper rational number. First हमें जानिए what is a proper rational number. A proper rational number is a fraction in which the denominator is bigger. So proper fraction का मतलब जदि तार denominator बड़ा हेतिबो. For example 3/7. It is a type of proper fraction because here we have larger denominator and smaller numerator. हला यार मीनिंग कोन? यार मीनिंग हला 7 भाग रो 3 भाग 7 parts रो 3 parts और 3 parts out of 7 parts. अब improper fraction का कहबा if the denominator is smaller than numerator or the numerator is bigger than denominator. ताले बड़ा के हेतिबो एठी numerator बड़ा हेतिबो like 14/7. here देखो numerator बड़ा काटर बड़ा denominator थार बड़ा, so it is an improper fraction. अब हमें पढितिले जे improper fraction is an impossible fraction. Okay, why? because 7 भाग 14 भाग हमें केबे भी कट कर परिबा नाही. Okay, so this is all about proper fraction and improper fraction. But now we will discuss how to represent this proper fraction as well as improper fraction on a number line. Okay, then हमें first कौन पढ़िबा जे how to represent proper fraction on a number line. Okay, so आपको पढ़िबा first thing we have to keep in mind that the value of a proper fraction always exists between 0 and 1. Okay, suppose this is a number line. Okay, this is 0, this is 1, this is 2, this is -1. so proper fraction value केते रो केते भीतर exist करिवो? proper fraction value सब बेले 0 रो 1 भीतर ही exist करिवो. देखो it always exists between 0 and 1. it means एक रो अधिका हबनी, शून्य रो लेफ्ट हैंड को नेगेटिव हबो नाही. ओके, so proper fraction value always exists between 0 and 1. understood? so एटा गोटा रूल हमें लिखि परिबा. कोन से रूल 1 कोन? value of proper fraction. okay, lies between 0 and 1. so 0 रो 1 भीतर सब बेले यार वैल्यू एग्जिस्ट करियो. बट हमें एठी कोन करिया थिला वी हैव टू रिप्रेजेंट द प्रॉपर फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन. हमें जानि गले जे 0 रो 1 भीतर एग्जिस्ट करियो बट को जगह रे whether it exists at this point or this point or this point or this point, where 0 आड़ को टिल्ट हबो ना 1 आड़ को टिल्ट हबो ना 0 और 1 मझिरे रहबो. हमें जानि छी कि तार एग्जैक्ट पोजीशन no. so now we will identify its exact position. how? see, we have to do a problem. suppose we have to represent 7/8 on number line. okay, on number line. so we have to represent 7/8 on the number line. how? first we have to draw the number line. this is the number line. okay, this is 0, this is 1, 2, -1, -2. okay, now since it is a proper or improper fraction, here the denominator is 8, the numerator is 7. okay, so which one is bigger? denominator is bigger. जेहेतु denominator टा बड़ा हैला ताले ए प्रकार फ्रैक्शन को कोन फ्रैक्शन कहि परिबा? प्रॉपर फ्रैक्शन कहि परिबा. सो इट इज क्लियर दैट इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन. आ गोटे कथा हम जानते जे यार वैल्यू सब काहर का भीतर एग्जिस्ट करिवो?
0 ରୁ 1 ভিতরে एग्जिस्ट करिवो ओके ताले जानि गले कि ए जो फ्रैक्शन ता 0 ରୁ 1 ভিতরে रहिबो वर्तमान हमें देखिबा को जागा रे एग्जैक्टली ये एग्जिस्ट करूछ अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल यार मीनिंग कोन इट इज अ फ्रैक्शन इट मींस व्हाट इट मींस 7 पार्ट्स आउट ऑफ 8 पार्ट्स सो आर माने कोन होला ना 8 भाग रु 7 भाग अंडरस्टूड so we have to make the gap between 0 and 1 into 8 parts okay so यार मीनिंग कोन थिला ना 8 भाग रु 7 भाग सेथि पई 0 ରୁ 1 ভিতরে थिबा जो गैप टाको हमें केते भाग रे विभक्त करबा 8 भाग रे विभक्त करबा for this we have to divide the gap into 8 equal parts 8 टा समान भाग रे विभक्त करबा केमितिका 8 टा समान भाग रे विभक्त करबा पई हमहु केतरा गार टाणिया पड़िबो 7 टा गार टाणिया पड़िबो लेट्स सी 1 2 3 4 5 6 7 हमें कितना गार टाणले 7 गार टाणले बर्तन देखिए केते पार्ट हला 1 2 3 4 5 6 7 8 ताले 7 गार टाणले 8 पार्ट्स इजीली हमें डिवाइड कर परछे 8 टा इक्वल पार्ट्स सिमिलरली इफ द क्वेश्चन इज टू डिवाइड द गैप इनटू 20 पार्ट्स ताले हमें कितना गार टाणीबा 19 टा 25 पार्ट्स डिवाइड करिया गले कितना गार टाणीबा 24 पार्ट्स टा गार टाणिया पड़िबो ताले गोटे कम गार टाण देले हमें एग्जैक्टली सेति पार्ट डिवाइड कर दबा सो हमें कितना इक्वल पार्ट डिवाइड करले 8 टा इक्वल पार्ट रे डिवाइड हे गला ऑलवेज कीप इन माइंड the distance from 0 to 1 is equal to the distance from 1 to 2 is equal to the distance from 0 to -1 is equal to the distance from -1 to -2 ए डिस्टेंस सबले फिक्स रखिबा वर्तमान 0 ରୁ 1 भीतर टाको 8 टा इक्वल पार्ट से डिवाइड कर दे वर्तमान 8 भाग रो केते भाग 7 भाग सो हम 7 भाग नबा ये गला 0 1 2 3 4 5 6 7 this is the 7 part 7 भाग so this is known as 7 by 8 so जानि हला 7 by 8 रो एग्जैक्ट पोजीशन कोठी ठीक 1 आर को ढळी के रहउची को जगह रहला 7 by 8 हियर ओके बुझि हला so in this way we can represent a proper fraction on a number line understood so since it is 7 by 8 it will be ताटू कम टिके हबो 6 by 8 एटा केते हबो 5 by 8 एटा केते हबो 4 by 8 एटा केते हबो 3 by 8 2 by 8 आउ 1 by 8 बट हमको रिप्रेजेंट करबा था 7 by 8 एटा हम रिप्रेजेंट कर देले एटा होची 7 by 8 अंडरस्टूड ओके सो प्रॉपर फ्रैक्शन को हम इजीली गोटे नंबर लाइन रे रिप्रेजेंट करि पाए सो इट इज क्लियर देन कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट हाउ टू रिप्रेजेंट improper fraction okay how to represent improper fraction you know a improper fraction is a fraction in which the numerator is larger ताले जो प्रकार फ्रैक्शन रे न्यूमरेटर टा लार्जर बा बड़ा थिबो फॉर एग्जांपल 13 by 9 in this case numerator is 13 denominator is 9 so which one is bigger numerator is bigger so this type of fraction is known as improper fraction ताले हमें वर्तमान improper fraction को कोडी नंबर लाइन रे शो करिया को जीवा को जगह रे एग्जैक्टली लाइज को जगह रे रहउची हम सेटा वर्तमान रिप्रेजेंट करबा अच्छा as we have studied proper fraction always lies from 0 to 1 so it lies in between 0 and 1 so what is the position of improper fraction ताले improper fraction को जगह रे रहइबो मन रखो improper fraction always lies beyond 1 that means it always lies after 1 on the number line for example suppose this is the number line okay this is the number line ताले हमें जाने 0 ରୁ 1 भितरे की रहइबो proper fraction so improper fraction को भीतर exist करिवो improper fraction always exist beyond 1 means एक रु अधिक हैला तो improper fraction value always greater than 1 हो ताले कोठ रहइबो एठी रहि पारे ए जगह रे एक रु अधिक बरा that means एक रु सेपड को रहि पारे बुझिया कि नहीं सो हमें कोन जानले रूल 2 रे कोन जानले value of improper fraction केते value of
improper fraction, okay, is greater than 1, ताले एक रु सब बेले तार वैल्यू बड़ा हबो. But a question arises, its value is always greater than 1, but at which point it lies? जदियो यार वैल्यू एक रु अधिक किंतु को जगह रे रहइबो, एक रु 2 भीतर रहइबो ना 2 रु 3 भीतर रहइबो ना 3 रु 4 भीतर रहइबो ना 4 रु सेपट को रहइबो. हमें तार एग्जैक्ट पोजीशन जानि जे कि जानिनो. बर्तमान हमर टास्क हैला तार एग्जैक्ट पोजीशन को डिटरमाइन करबा. सो लेट्स डिटरमाइन. Suppose we have a question 13 by 9. It is an improper fraction. So we have to represent it on the number line. Okay. So before representing it on the number line, the first task is to make it mixed fraction. So हमें ताको बर्तमान कौन करेगा एक प्रकार फ्रैक्शन को ताको हमें मिश्र भग्नांश बा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिबा. बुझियाले कि नहीं ताकू कोथरे शो करिया पाए नंबर लाइन में शो करिबा पाए. बुझियाला. सो ताले हमें ताको कोन करिबा मिश्र भग्नांश बा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिबा. हाउ देखो इट मींस 13 डिवाइडेड बाय 9, दैट मींस 13 इज डिवाइडेड बाय 9. तामाने 13 को 9 द्वारा डिवाइड करिबा. केते होची 9 1 जा 9 माइनस 4. अंडरस्टूड. नाउ देखो एटी 4 को कोन कहा जाए रिमाइंडर. आर रिमाइंडर 1 को कौन कहा जाए कोसेंट. क्यू 9 को कौन कहा जाए डिवाइजर. डी. सो 4 को कौन कहा जाए भागशेष बा रिमाइंडर. 1 को कहा जाए भागफल बा कोसेंट. 9 को कहा जाए भाजक बा डिवाइजर. बुझियाला. सो 13 by 9 का मतलब मिश्र भग्नांश बा मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखिबा. ऑलवेज रिमाइंड हमें केमती लिखू ऑलवेज प्रथम आमे लिखो q को. ओके. ऊपर लिखो रिमाइंडर r, तळे लिखो डिवाइजर d. क्लियर. सो फर्स्ट रहइबो के रहइबो फर्स्ट कोसेंट. हियर कोसेंट इज 1, रिमाइंडर इज 4 डिवाइडेड बाय डिवाइजर इज 9. क्लियर. इट विल बी 1 whole 4 by 9. It is written as or read as 1 whole 4 by 9 बा ओडिया रे पढले कोन पढा जाय एक पूर्णांक 4 विभक्त 9. अंडरस्टूड. इट मींस 1 whole 4 by 9. नाउ द improper fraction is converted into mixed fraction. improper fraction ता को हम कोते कन्वर्ट कर देले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देले हैला. वर्तमान आको हमें रिप्रेजेंट करबा नंबर लाइन. ओके. एज वी नो the value of improper fraction is always greater than 1. ताले एक रु बड़ improper fraction रा value. सो एक रु बड़ हेले एक रु 2 भीतर रहइबो ना 2 रु 3 भीतर रहइबो ना 3 रु सेपट को रहइबो. वर्तमान में देखिबा. अच्छा यार मीनिंग हमें कोन यार मीनिंग. यार मीनिंग हैला एक पूर्णांक 4 विभक्त 9. आउतरे बुझा एक पूर्णांक. पूर्णांक मींस से अंकटा बा से नंबरटा पूरा हे जाय छै. एक पूर्णांक माने एक पूरा हे जाय छै. ता माने कोन एक रु अधिक. एक पूर्णांक माने एक पूरा हे जाय छै एक रु अधिक. ता माने हम जानि गले ए नंबरटा एक रु अधिक आ का भीतर रहइबो ताले 2 पछ को रहइबो. ता नंबरटा कार का भीतर एग्जिस्ट करिवो. सो द नंबर एग्जिस्ट बिटवीन 1 and 2. बुझियले कि नहीं. एक पूर्णांक माने एक रु अधिक ताले केते रु कम हेतिबो 2 रु कम हेतिबो. सो इट लाइज बिटवीन 1 and 2. सो इट इज क्लियर. त आ काम सरी गला. नाउ कम्स टू दिस सेक्शन. कौन लिखा है जी 4 डिवाइडेड बाय 9. यार मीनिंग कौन 9 भाग रु 4 भाग. हां कि नहीं 9 भाग रु 4 भाग. ता माने जेहेतु एटा 1 और 2 भीतर एग्जिस्ट करूची ताले आको हमें केते भाग रे विभक्त करबा 9 भाग रे विभक्त करबा. ताले केतरा गार टाणिबा पड़िबा 8 टा गार टाणिबा पड़िबा. 1 2 3 4 5 6 7 8. So divide the gap between 1 and 2 into 9 equal parts. Okay. By putting how many marks 8 marks. ताले 9 टा इक्वल भाग रे विभक्त करबा केतरा गार टाणी की 8 टा गार टाणी. देखिबा 9 भाग हले कि नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हे गेल 9 भाग. नाउ 9 भाग रो केते भाग हम नबा 4 भाग नबा. अच्छा एटा हम करबा 1. ओके 1 2 3 4 ए 4 भाग हे गला. सो दिस इज 1 whole 4 by 9.
Understood? This point is represented as 1 whole 4 by 9. Okay, so we can also represent an improper fraction on the number line, but condition कौन हमको improper fraction को कोथे convert करिया पड़िबो mixed fraction ने convert करिया को पड़े. Okay, let's do one more question. Suppose we have 8 by 3. It is also improper fraction. ताले आपको हमें कोथे फर्स्ट convert करिया mixed है केमिति का 8 को डिवाइड करिया का द्वारा 3 द्वारा 3 2 जा 6. So 2. Here 2 is remainder. Here this 2 is quotient. This 3 is divisor. As we know, we have to convert it into mixed fraction. Then first we have to write here quotient. Puraiva R, puraiva D. Quotient kete dekha thi 2. Remainder kete 2. Divisor kete 3. Tale kon asla number ta 2 whole 2 by 3. Okay. So the number is 2 whole 2 by 3. ता माने कोन ओडिया रे पढला कोन पढिबा 2 पूर्णांक माने 2 पूरा हे जाय छै ता माने 2 रु अधिक केते रु कम हेतिबो 3 रु कम हेतिबो. सो इट लाइज बिटवीन 2 and 3. सो आ काम सरी गला हम जानि गले ता नंबर ता कार काम एडजस्ट करबो 2 रु 3 रे एडजस्ट करबो. वर्तमान देखिबा 2 by 3 रो मीनिंग को 2 by 3 रो मीनिंग हैला 3 भाग रो 2 भाग. So we have to divide it into 3 equal parts. तामाने हम एको केते भाग व्यक्त करिया 3 भाग रे केते भाग कान 3 भाग हेजबो दीटा गाना गोटे दीटा देखो 3 भाग हेला फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 भाग केते भाग नबा 2 भाग नबा 1 2. This is known as 2 whole 2 by 3. Clear? So in this way we can represent improper fraction on the number line. This is all about the representation of proper and improper fraction on the number line. In the next session, we will discuss about how to find out a rational number between any two rational number. Okay, thank you.